Hello students, welcome to the next class of the physics lecture. Today we are going to discuss about what the relation between the electric field and the electric potential. In the previous videos we have discussed about the what is the electric field due to the point charge as well as the electric potential. Now in this lecture we are going to set up a relation between these two terms. For that we will consider a unit positive charge in which it has a field up to this point. Suppose that, so what we will do, we will take a unit positive charge or test charge from the infinity and took it in the field of this electric source charge. Is that clear? क्या किया हमने भाई इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस में पड़ा है इसको यहाँ पे सेटअप करेंगे. सो ऑब्वियसली whenever we take this charge in the field of this positive charge, so we will take the displacement in this direction as well as the repulsive forces will be act here. Is that clear? Why with the repulsive forces? Because the test charge is also a positive charge. When this test charge will bring in the field of the other source charge, so it will repel it. Okay? So the repulsion force will be act in the outward directions. So have the displacement in the inward direction. So according to this, we have to calculate the work done. So what kind of the work has to be done in bringing this? So we know the formula of work done, that is force into displacement into cos of theta. So here the angle between the force and the displacement. Obviously, the force is the positive, displacement is the 4. So what will be the angle between these two? It will come out to be 180 degree. So the theta here is 180 degree. So the work done will come out to be negative of the Fe into dx. But remember, हमें यहाँ पे सेटअप करना है रिलेशन किसके बीच का, पोटेंशियल एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड. Now in given quantities, where will the electric field? Obviously in the one quantity, that is the force. Why? Because we know that since E is nothing but it is the force per unit test charge. So the force becomes out to be E into test charge. So substitute the value here, that is the electric field. So the work done comes out to be negative of the E into Q naught into dx. If I took this test charge here, so this will come out to be work done per unit test charge negative of the E into dx. So this is nothing but it is the potential. In the previous video we have discussed about the work is done on the test charge is equivalent to the potentials in the test charge. Okay? What kind of the potential has to be set up here? So that potential is represented by dV. We are taking the small amount of the work done, so that's why there is the smaller potentials will be equivalent to the negative of the E into dx. So the electric field becomes out to be negative of the dV upon dx. So that is the appropriate relation between the electric field and the potential. Where negative sign just indicating that in the increasing of the electric lines, in the direction of the electric lines, the potential is going to be decreased. ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहाँ से इस तरफ चलेगी, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगी तो ऑब्वियसली इट विल गेट वीकर. ठीक है, तो जैसे ये वीकर होती जा रही तो ऑब्वियसली पोटेंशियल भी तो धीरे धीरे कम ही होता जाएगा. जब हम इन्फिनिटी में पढ़े तो इन्फिनिटी में हमारा पोटेंशियल कितना होता है, दैट विल बी इक्वल टू द जीरो. और जैसे इस तरफ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, राइज अप करता जाएगा. जैसे 1 2 3 4 रफ डाटा मान लेते हैं 5 6. ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा. सो दिस नेगेटिव साइन हैज यूजुअल मीनिंग. सो रिमेंबर दिस थिंग्स बाय दिस नेगेटिव साइन here. So this just indicating that कि जैसे हम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, ड्रॉप करती चली जाती है. ठीक है, एंड बाय आल्सो यूजिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंसेस. डिस्टेंस अगर हम मानते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है भाई, इस फील्ड में डिक्रीज कर रहा है. सो नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड
जैसे जैसे हम दूर जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, स्ट्रॉन्ग है, फिर वीक होगी और वीक और ज़्यादा वीक, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, वीक होती चली जाएगी। ठीक है, तो दिस वन इज द appropriate relation between the electric field as well as the electric potential. Thank you all.